the last of governance and administrative related reforms today. Of the total 11 things that I said, 3 of them relate to reform related measures. The third is we find that farmers do not have a standard mechanism which can be enforced for him to get a predictable price, a predictable sale of his produce, even before he starts sowing. So at the time of sowing, he goes in with uncertainties. He sows. If he is lucky and no monsoon or no other disaster reaches him, he is able to produce his produce, but doesn't get the right price, but doesn't know how much of it can be sold. So in order to bring in a certain certainty, which is obtainable prior to his sowing, well before every season, if he can be given a certain kind of a assured price return quantity, it will lead to a lot of fairness for the farmer. So we want to bring in a facilitative legal framework. Government of India will move in that direction to enable farmers for engaging with processors, food processors for instance, aggregators, large retailers and exporters, so that they will be able to fix their own fair price, be sure that he can certainly export, and also in the process benefit from better technology, better seeds, better assistance from the person who is going to buy it from him. So we would want to have an assurance in produce, in price and in quantity given to a farmer each time before he goes to sow his seeds. Rabi or Kharif, he should have well in advance an assurance of how much he would get for his crop, what is going to get sold, and what standard is he expected to produce. A legal framework is what we'll work at. किसानों के लिए सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, एश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए, जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो है उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो। इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है।